इससे पहले हम लोग हार्डी विंबर प्रिंसिपल ये पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे और आप सब कुछ नोट भी करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो आप नोटबुक बाहर निकालो, टेक आउट योर पेन और पूरा नोट करो अच्छे से। इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है, वो सारे असम्पशंस वगैरह सब नोट करो। और मुझे आवाज नहीं चाहिए। For example, let's suppose we have this population here. Now the Hardy-Weinberg equation for describing that gene pool is P plus Q equals 1. Now, so Hardy-Weinberg law का जो equation है, it is P plus Q is equal to 1, where P is nothing but frequency of dominant allele. For example, capital R. Frequency का मतलब होता है how many times, isn't it? Frequency मतलब how many times. तो कैपिटल R यानी कि डोमिनेंट allele कितनी बार यहाँ पे प्रेजेंट है, that is what called as capital P. P का मीनिंग समझा आपको? P का मतलब क्या है यहाँ पे? Frequency of dominant allele. And what is the meaning of small q here? Frequency of recessive allele, that is small r. Okay? और ये नीचे क्या दिया हुआ है? What is given? Example of a gene pool. समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे अलग अलग alleles दिए हुए हैं, right? सुन रहे हो क्या ध्यान से? Now pay attention. P is a variable used to represent the frequency of the dominant allele. In this case, I'll be talking about the trait.
this case, or the inability to roll your tongue. So if our gene pool, if our population consisted of somebody who's homozygous dominant, homozygous dominant, right? And this is again homozygous dominant, then heterozygous dominant, and homozygous recessive, right? Another person is homozygous. वो जीन पूल दिया हुआ है, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी homozygous dominant है, दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म homozygous dominant, right? Is dominant. Somebody who is heterozygous for the tongue rolling ability, and then somebody who's homozygous recessive. What is P and what is Q in my gene pool? Well, so this is what given. This is a given gene pool of different organisms in a population. समझ में आया क्या? This is a यहाँ पे लेकिन क्या किया हुआ है? When I'm using the term population ना, that means for large quantity. Population term की जब हम ये term use करते हैं, उसका मतलब होता है large quantity, something in large. बहुत सारे लोग. आनी बात समझ में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, we are just looking for the explanation part, तो हम लोग यहाँ पे small population ले रहे हैं, 4 individuals ले रहे हैं. बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोग population consider नहीं करते, यहाँ पे हम लोग small quantity में organism को consider कर रहे हैं, हमने 4 ही organisms ले रहे हैं और 4 organism का gene pool consider कर रहे हैं. आई बात समझ में? मतलब से population that means कि large quantity हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे आपको explain करना है, हम just सिर्फ explanation part देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने individual क्या कर रहे हैं? Limited कर रहे हैं. Clear? ठीक है? I would solve this simply by counting up 1, 2, 3, 4, 5 big R alleles out of a total number in my gene pool of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alleles, which gives me 0.625. So P in this case is 0.625. Whereas Q is, I can solve this in 2 ways. One, I can say that 1, 2, 3, divide by 8. Or I can pop it into my Hardy-Weinberg equation here, P plus Q equals 1, and do some subtraction. And I can say, well, if P is 0.625, then I know 1 minus 0.625 is 0.375. सबको आगे समझ में ठीक से इसके ऊपर डेफिनेटली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप समझ लो इस इक्वेशन को कैसे क्या यूज करना है. Right? That's pretty straightforward. Now, it gets a little bit more complicated when we go to the equation for describing the individual population's genotypes. अच्छा, अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था ये बहुत ही छोटा इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन था P plus Q is equal to 1. एक और इक्वेशन है जो आप देख लोगे कैसा है वो भी ध्यान दो. But don't worry, because you've actually seen this before. What I did is I took my P plus Q equals 1, and I just did what you've done before in your math classes. I squared both sides. You know in math, if you do one thing on one side of the equation, you can do it to the other side of the equation, and things still work out. So I get P squared plus 2PQ plus Q squared equals 1. ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, राइट? A squared plus 2AB plus B squared is equal to 1, right? What's P squared? P squared is the frequency of individuals who are homozygous dominant. Okay, सब ध्यान दो. अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था? P पढ़ा था ना? P क्या था? Frequency of dominant allele, capital R. So what is P square then? It is R and R. बराबर है ना? सबको आया समझ में? ठीक है? Then Q square will be 2PQ is equal to what? R and small r, right? Then Q square will be R small r and small r, right? In my example of tongue rolling, it's big R, big R. 2PQ is the frequency of big R, little r, or heterozygous individuals. Q square is the frequency of little r, or सबको यहाँ से समझ में आया? आपने नोट किया? सब लोग नोट कर रहे हो ना? homozygous recessive individuals. And again, this is for a population that's in something called genetic equilibrium. That's where there's no changes going on from one generation to the next in terms of these frequencies, either the genotypes or frequencies of the alleles within the gene pool. Now, an example kind of problem that you're going to face when you're studying Hardy-Weinberg is one like this. For example, in a population, वहाँ पे example दिया हुआ है, सभी ध्यान दोगे ऊपर. 0.16
population cannot roll their tongues. क्या दिया हुआ है? 0.16, ठीक है, 16 cannot roll their tongues. What is the frequency of capital R, small r? ठीक है, that means what? Capital R, small r का मतलब क्या होता है? कि वो हाँ 2pq है, but उसका मतलब क्या होगा? यानी कि ऐसा population, ऐसे लोग, ऐसे individuals जिनमें capital R, small r यानी कि heterozygous dominant genes introduce हुए, वो लोग अपना टंग रोल कर पाएंगे, बराबर है ना? पर उनके जीन किस टाइप का रहेगा? अलील किस टाइप के रहेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रहेंगे। सबको आ समझ में? ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0.16 कैन नॉट रोल देयर टंग, दैट इज फॉर स्मॉल आर रेसेसिव ट्रेन हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके, पे अटेंशन नाउ। What is the frequency of big R little R's? Now, a common thing is for kids to go 0.16 can't roll their tongues. 0.16 cannot roll their tongues. That means what? Recessive allele. That means small r. But here remember, 0.16 is not small r. It is q square. r. बात समझ में आई कि आपको? एक इंडिविजुअल में स्मॉल r से थोड़ी रहेगा, पेयर ऑफ अलील्स रहेंगे ना, r रहेगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? So 0.16 मतलब q नहीं है, it is q square. That is q will be equal to 0.4. समझ में आ रहा? ठीक है? Okay, better. That is Q. No, remember, Q is describing the gene pool. What fraction of the total DNA in the entire population is the little r? You know that everybody has 2 copies of every gene, so somebody has to have 2 copies of little r in order to show non-rolling. So 0.16 is little r, q squared. So I pop that in. Q squared equals 0.16. Alright, what do I do next? Well, that's when I whip out my math skills and I take the square root of both sides. If q squared is 0.16, then q is the square root of 0.16 or 0.4. सबको समझा ना याद रखने से? Now, I go to my first of the Hardy-Weinberg equations, p plus q equals 1, and if I plug in some numbers, let's see, p winds up being p plus 0.4 equals 1, p equals 0.6. Right? So now I go up to here. Which one of these is heterozygous individuals? Big R, little r? So what's the question asked? Small r, capital R, small r. This is what asked, right? तो आपको एक p मिल गया, q मिल गया, so we need to find out tq value, right? 2pq. So 2pq equals 2 times 0.6 times 0.4, which tells me that the frequency is 0.48. So roughly half of the population is heterozygous. They can still roll their tongue, but they are actually carrying that little r, that non-rolling allele. बात समझ में आई कुछ? इतने population मतलब this much can, इतने individuals can roll their tongues, but they do consist of recessive genes, which is responsible for non-rolling of tongue. आई बात समझ में आपको? ठीक है? But it's recessive, so they don't show it. Now, here's a little trick. I'm going to let you in on a secret that biology teachers have. We love to mess with your heads. They will rarely, unless your teacher is really nice, they'll rarely say 0.16 cannot roll their tongues. What they'll do is they'll say 0.84 can roll their tongues. सुन लो ध्यान से, देखिए you ask the question 0.4 can roll their tongues. अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो भी आप उसको सॉल्व करके आना चाहिए. आ रही बात समझ में? Then we'll sit in the back room theater. Because a lot of kids. Did you get? उसने कहा कि अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आप बहुत खुश हो जाओगे और यू वेरी हैप्पी कि हमको क्वेश्चन आ गया, बट क्वेश्चन का मीनिंग अलग है. ठीक है, बात ध्यान दो. Kids will sit there and go 0.84 can roll their tongues, and they'll assume 0.84 is big R, little r. Sorry, big R, big R. In actuality, 0.84 is this plus that. So the trick to solving Hardy-Weinberg's is look for the q squared, look for the homozygous recessives. So if they say 0.91% can, or 0.91 can roll their tongues, you know that 0.09 cannot. And that's what you're supposed to solve. आया समझ में आपको? सुन रहे हो कि ध्यान से? नहीं समझा? किसको समझ में आ गया? हाँ, बोलो. हाँ.
they can ask you कि point 4 can roll their tongues. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो रोल नहीं कर सकते. यहाँ पे कैसे बताया क्वेश्चन में कि point 16 कैन नॉट रोल देयर टंग. तो आपने क्या फाइंड आउट किया? कैन रोल देयर टंग को फाइंड आउट किया. इफ द क्वेश्चन इज कैन रोल देयर टंग तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कैन नॉट रोल देयर टंग. बात समझ में आई क्या? ठीक है, वही एक्सप्लेन कर दो. आगे ध्यान दो. अब इस थ्योरी के कुछ assumptions है, these are quite important, ये आपको अच्छे समझ लेना. मतलब कि ये थ्योरी आप कब अप्लाई करोगे? अगर ये assumptions fulfill हो रहे तो, ठीक है? So pay attention. A little trick that I'm telling you guys. I don't do my own stupid trick. Now, this is all math. This is all based on statistics, and if you've ever taken any kind of statistics class, you know that there's a bunch of assumptions. When I flip a coin, I assume 50% of the time it's going to come up heads, 50% of the time it'll come up tails. What are the assumptions of the Hardy-Weinberg? सभी ध्यान देना, it's quite important. सभी ध्यान दो अच्छे से. Equations. First, this is assuming we're describing a large population. Okay. तो ये थ्योरी, ये जो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल है, ये तब आप कब अप्लाई करोगे? When we are dealing with a large population. Remember अभी जो आपने एग्जांपल लिया था RR and capital R, small r, वो था small population भी for the explanation purpose only. Otherwise, this theory is applicable when we are dealing with a large population. समझ में आया क्या आपको ये? So what is the first assumption? Presence of large population. Okay? ध्यान दो. You know that if I flip a coin once, it's not going to come out half heads, half tails. सुन रहे ध्यान से. और क्या एग्जाम्पल बता रहे वहाँ पे? अगर हेड है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ आधा हेड आ आधा टेल है. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. मतलब 50% चांसेस ऑफ हेड और 50% चांसेस ऑफ टेल. तो इसलिए स्मॉल पॉपुलेशन में इसका यूज करने का मतलब नहीं बनता है. ये कुछ आप कब यूज करोगे? व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज. बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन में क्या चांसेस है दैट इज वेल नोन टू अस ना. अब दो इंसान में क्या चेंजेस रहेंगे? इस इंसान की क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, इसमें क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, वो पता कर सकते हैं. अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना कि इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन सा कैपिटल आर होगा, कौन सा स्मॉल आर होगा. सही स्मॉल पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया, आराम से किया. ये इक्वेशन कब यूज करोगे? व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज. समझो ध्यान से, ठीक है? ध्यान दें. It's either going to be 100% heads or 100% tails. If I flip it 10 times, it could come up 7 times heads, 3 times tails. You're not going to sit there and scream that the end of the universe is coming. No, but if you flipped it 1,000 times and you got 700 heads and 300 tails, then you might assume either there's something weird going on with the coin, or there's something weird going on with the rules of the universe. No mutations. If you ये theory will be applicable when there is no mutation. मतलब कि उस population आप ये assume करके चल रहे हो कि mutation नहीं हुआ है. क्योंकि अगर mutation हुआ होगा तो आगे gene pool जो है उसमें changes रहेंगे ना फिर. आगे बात समझ में. Changes अगर आए तो आपका जो भी experimental part रहेगा वो तो fail होगा, वो तो wrong आएगा. सुन रहे हो ध्यान से? तो there should not be ये assume करके चल रहे हैं कि उस population में mutation नहीं हुआ है. सुन रहे हो क्या? अगर mutation हुआ होगा तो gene pool में changes रहेंगे. ठीक है? Next is flip a coin, one side no migration. heads and the other side becomes. Okay. No migration का मतलब होता है कि आपने एक large population select किया हुआ है. उस population से ना तो कोई जा रहा है और ना ही उसमें कोई add हो रहा है. बात समझ में आई? ठीक है? आपने एक area का population count कर लिया तो ये theory कब applicable रहेगा? हाँ, constant कब रहेगा? जब उस population से ना तो कोई जा रहा है, migration मतलब ना तो कोई जा रहा है और ना ही कोई अंदर add हो रहा है. समझ में आया? ठीक है? तो assumption क्या है? No migration. उसके बाद mating is random. मतलब क्या? किसी के साथ भी वहाँ पे mating हो सकती है. समझ में आ रहा है? ठीक है? Then last is no natural selection. That means what? कोई वहाँ पे मर भी नहीं रहा है. Natural selection नहीं हो रहा है. वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे population अगर हो भी रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ deletion नहीं हो रहा है. जो population की size change नहीं हो रही है. आपको आया समझ में? ठीक है? तो these are the assumptions. ये assume करके हम उस population में इस theory को apply करते हैं, इस equation को apply करते हैं. Clear? So what are the assumptions? First, large population, no mutation, no migration, then no random mating. Random mating is that ना? Mating is random, right? ठीक है? उसके बाद no natural selection. आपको एक theory और P, Q का meaning समझा है क्या?
ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक से देख लेंगे, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जस्ट एक सेकंड लगेगा, ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट आप कॉल कर सकते हो। Hi, it's Mr. Anderson. अरे अच्छा एक्सप्लेन करेगा, आपको सिर्फ ऊपर की डब्बे लिखते हैं और मेरी आवाज के साथ। Ology Essentials video 3. This is on genetic drift or random evolutionary change. इधर ध्यान दो, आपको What ऊपर I चार think लिखा about है it ना, here is उस पे ध्यान देना है। significant changes यहाँ पे in ओरिजिनल gene पॉपुलेशन pool. ब्लू और रेड दिख रहा है आपको, And these are the gene pool, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एलील्स है, मतलब जीन पूल है। इसमें कैसे कैसे चेंजेस आएंगे आपको सिर्फ ऊपर ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जल्दी ध्यान दो। These represent the alleles inside that gene pool. So let me start it going for just a second. And so, let's say the dominant is red. This is the original population, this is the second generation, दिख रहा है? सेकेंड जनरेशन में ऑब्जर्व करो, ये पर्पल और रेड पे ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे कितने थे, 10, ओके, आगे ध्यान देना, थर्ड जनरेशन। And the Q value is going to be the recessive. And so the first time we've got 10 and 10. And so our P value is going to be 0.5, right? And our Q value ओके, नाउ सी कितने बचे, 3, ठीक है, थर्ड जनरेशन में। is going to be 0.5. So that'd be the first generation. फोर्थ Now we जनरेशन randomly choose, it's now P5. कितने, Now it goes to 0.2. The size of the population, we get the elimination of that. एक भी नहीं, फिफ्थ वाले में नो रेड दिख रहा है क्या, वो रेड और ब्लू है क्या, वैसे एलील्स है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब आगे वेरिएशन होगा तो कुछ एलील्स, ठीक है, वो डिलीट हो रहे, निकल जा रहे हैं, आया समझ में आपको, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बस अपने टेक्स्ट बुक का वो टर्म सिर्फ मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सबको समझ में आ जाएगा, फिर ठीक है, एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 126 दिख रहा है, वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट दिख रहा है क्या, 1 to 6 जेनेटिक ड्रिफ्ट, वहाँ पे ध्यान दो। एनी अल्टरेशन दिख रहा है क्या, एनी अल्टरेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, राइट, एनी अल्टरेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी, दैट मींस फॉर नंबर ऑफ एलील्स ना, नंबर ऑफ टाइम्स एलील्स रिपीट हो रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, राइट। तो एनी अल्टरेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। प्योर चांस मतलब दिस इज ओनली बाय चांस, ये बाय चांस हो रहा है, क्या हो रहा है, वैसे ओरिजिनल पॉपुलेशन में 10 पर्पल जीन्स थे और 10 पर्पल रेड, जैसे से आगे नेक्स्ट जनरेशन बढ़ते गया, रेड एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम होती गई, और ऐसा टाइम आया फिफ्थ जनरेशन में कि रेड एलील पूरे गायब हो गए। सुन रहे हो ध्यान से, इससे होगा क्या कि रेड एलील गायब होना मतलब कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी रही होगी वो आगे की जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि वो एलील का जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन से डिलीट ही हो गया ना, गायब ही हो गया ना, दिस इज द टाइप ऑफ वेरिएशन ओनली। आपको समझ में आया? तो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज alteration in allele frequency in the natural population by pure chance is called as genetic drift. For example, elimination of a particular allele, for example in this case कौन सा allele remove हो रहा है, red allele, ठीक है, particular allele from a population due to events like क्यों हो सकते हैं, because of accidental death prior to mating of an organism, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में मेटिंग हुई नहीं, मेटिंग होती तो उसका जीन आगे ट्रांसफर हो जाता, मेटिंग नहीं हुई है और वो ऑर्गेनिज्म मर गया, एक्सीडेंट डेथ हो गई, तो उसका जीन उसी के अंदर रह गया ना, उसका वो पर्टिकुलर एलील उसी के अंदर रह गया, समझ में आया? मान लो कि अर्थक्वेक होता है और वो सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक रेड जीन था, रेड एलील था और मेटिंग नहीं हुई, समझ में आया? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ओनली बाय चांस, आया कि समझ में आपको? ओके, इवेंट्स लाइक एक्सीडेंटल डेथ प्रायर टू मेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज द सोल पोसेसर ऑफ पर्टिकुलर एलील, मतलब क्या, पोसेसर है, सॉरी, दैट मींस व्हाट, वो अकेला ही ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर वो एलील प्रेजेंट था और मेटिंग हुई नहीं है, तो वो मर भी गया है, तो फिर उसकी वो एलील आगे ट्रांसफर नहीं हो पाई, और वो एलील जो भी कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द जीन पूल, दिस वाज द जीन पूल से अब रेड एलील कंप्लीटली डिलीट हो गया,
smaller populations have greater chances of genetic drift, isn't it? अगर population पहले से small है, उसमें ऐसे कम ही इंडिविजुअल होंगे जिनके अंदर वो पर्टिकुलर एलील प्रेजेंट होगा, और वो भी स्मॉलर पॉपुलेशन का वो इंडिविजुअल चला गया, गुजर गया। आगे बात समझ में आपको, ठीक है? लेकिन अगर लार्जर पॉपुलेशन होता तो चांसेस थे कि उनमें वो पर्टिकुलर एलील ज्यादा होगा। एक बार मर भी जाए तो और एलील्स वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना वहाँ पे,